शाहजहां की बेटी जहानारा को शॉपिंग करने का बहुत शौक था, जिसके चलते हुए देश के दूर दराज के बाजारों तक जाकर शॉपिंग करती थी। जहानारा शाहजहां की चहेती बेटी थी, इसलिए वो उसे दूर बर्दाश्त नहीं कर पाते थे। तभी उन्होंने सोचा कि क्यों न एक ऐसा बाजार बनाया जाए जहाँ से दूर दूर से व्यापारी आए, जिससे जहानारा को कहीं दूर न जाना पड़े। बस शाहजहां की इसी सोच ने 1650 में चांदनी चौक को जन्म दिया। शाहजहां ने इस बाजार को बाकी बाजारों से अलग बनाने की सोचा, इसलिए इस बाजार की बनावट चकोर रखी गई और बीच का हिस्सा खाली छोड़ा गया, क्योंकि उस जगह पर यमुना नदी का पानी आता था। बनावट से अद्भुत और विचित्र होने के चलते देश भर के व्यापारी का ध्यान इस बाजार ने खींचा। कहा जाता है कि जब बाजार बनकर तैयार हुआ और इसे पहली बार देखा गया तो वो समय रात का था और यमुना नदी पर चांद की रोशनी पड़ रही थी। बस तभी से इसका नाम चांदनी चौक रख दिया गया। तो दोस्तों, ऐसा ही इन्फॉर्मेशन वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब, शेयर, लाइक जरूर कीजिए। धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों, अक्टूबर 1670 को जम्मू कश्मीर के राजौरी में लक्ष्मण देव का जन्म हुआ, जो कि बचपन से ही युद्ध कला में बहुत माहिर थे। और दोस्तों, इन्होंने सिर्फ 15 साल की उम्र में अपना घर छोड़ दिया और एक सन्यासी बन गए। लेकिन दोस्तों, सितंबर 1708 को इनकी मुलाकात गुरु गोबिंद सिंह जी से हुई, जिन्होंने इन्हें मुगलों के जुल्मों के खिलाफ लड़ने की प्रेरणा दी और इन्हें बंदा सिंह बहादुर का नाम दिया। दोस्तों, गुरु जी का आदेश लेकर ये पंजाब में मुगलों के खिलाफ लड़ने के लिए चले गए। दोस्तों, उस वक्त वजीर खान पंजाब में जुल्म कर रहा था और गुरु गोबिंद सिंह जी के छोटे साहबजादों के साथ साथ हजारों निर्दोष लोगों को मार चुका था। लेकिन दोस्तों, फिर बंदा सिंह बहादुर और उनकी सेना ने वजीर खान की सेना को हराया और उस वजीर खान को खत्म किया। दोस्तों, वजीर खान के मरने के 5 साल बाद मुगल फौज ने बंदा सिंह बहादुर को घेरा और उनको पकड़ लिया। और दोस्तों, फिर मुगलों ने उन्हें कई कष्ट पहुंचाए और उनकी आंखें फोड़ दी और उनकी चमड़ी को चिमटे से उतारा और कहा कि अपना धर्म परिवर्तन करो। लेकिन दोस्तों, बंदा सिंह बहादुर ने अपना सिर नहीं झुकाया और अपना धर्म परिवर्तन नहीं किया और अंत में अपना बलिदान दे दिया। कत्ल करने से पहले बंदा सिंह बहादुर के सामने 2 शर्तें रखी गई, मौत या इस्लाम। बंदा सिंह ने खुशी खुशी मौत को चुना। मौत से पहले बंदा सिंह बहादुर को कुतुबुद्दीन की दरगाह पर लाया गया और फिर जंजीर से बने बंदा सिंह बहादुर को दरगाह के चारों ओर घुमाया गया। उसके बाद बंदा सिंह बहादुर को एक स्थान पर बैठा दिया गया और उनके 4 वर्षीय अजय सिंह को उनकी गोद में बैठा दिया गया और ये कहा कि वह अपने बेटे का कत्ल अपने हाथों से करें। जब बंदा सिंह बहादुर ने ये करने से मना कर दिया तो मुगलों ने स्वयं तेज धार वाली तलवार से 4 वर्षीय अजय सिंह के टुकड़े टुकड़े कर दिए। इतना सब करने के बाद भी उनका कहर नहीं टला तो उन्होंने बंदा सिंह बहादुर के मुंह में उन्हीं के बेटे का कलेजा दे दिया। उसके बाद उन्होंने बड़ी बेरहमी से बंदा सिंह बहादुर की आंखें निकाल दी और उनके मांस को गर्म चिमटे से खूब नोचा जब तक उनकी
हड्डियां नहीं दिखाई दी। आखिर में उनके शरीर के प्रत्येक अंग को काटकर अलग अलग कर दिया। शायद इसीलिए बहादुर सिंह जैसे लोगों की बहादुरी को इतिहास में नहीं दिखाया जाता। गाइस, यह घटना है 1990 की, जब कश्मीर घाटी में आतंकवाद बहुत ज्यादा बढ़ गया था और इस आतंकवाद के चलते वहां के लोगों को पलायन तक करना पड़ गया था और तभी से कश्मीर से अमरनाथ यात्रा निकलने वाली थी। तब आतंकियों ने कहा कि अगर कोई अमरनाथ यात्रा के लिए आया तो वह जिंदा बचकर नहीं जा पाएगा। तब इस बात का जवाब दिया हमारे श्री बाला साहेब ठाकरे जी ने। उन्होंने कहा, हज की सभी फ्लाइट मुंबई से जाती है। अगर आप लोगों ने अमरनाथ यात्रा को रोकने की कोशिश की तो हज वाले हज भी नहीं जा पाएंगे। और इसका असर यह हुआ कि अगले दिन अमरनाथ यात्रा शुरू हो गई और आतंकवादियों ने अमरनाथ यात्रियों को कुछ नहीं किया। गाइस, इसे कहते हैं शेर की दहाड़। आपको यह सुन के कैसा लगा चैट सेक्शन में जरूर बताना और ऐसे अमेजिंग फैक्ट जानने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। This Gurdwara commemorates the courage and the martyrdom of Banda Singh Bahadur. It also commemorates the death of his 4-year-old son, as well as the martyrdom of over 700 Sikhs. This Gurdwara in Mehroli is near the Dargah of Khwaja Qutubuddin Bakhtiar Kaki. This was first built in 1970 with the efforts of Jathedar Santokh Singh, the then secretary of the Delhi Gurdwara Committee, and was later renovated, and a new building was constructed in 1991-92 by Baba Harbans Singh Ji. Earlier known as Madho Das, Banda Bahadur had been a yogi who had achieved magical powers, which he used to impress people. When Guru Gobind Singh encountered Madho Das in the Deccan, he tried to use his powers on Guruji without any success. Humbled, he realized that he was before a great soul. Madho Das fell at Guruji's feet and humbly asked to be accepted as his disciple, saying, "I am Banda, your slave." Later, because of his reputation for courage and perseverance of his beliefs, the name Banda Singh Bahadur became prevalent. After he embraced Sikhism, Banda became a staunch Khalsa and a true follower of the teachings of the Guru. Before his death in Nanded in 1708, Guru Gobind Singh appointed Banda Singh to lead the Sikh Panth to avenge the death of the Guru's father and of his 2 sons. He was charged to lead the fight for freedom from the Mughal rule in Punjab and to protect the people from the onslaught of Wazir Khan. Guruji's hukamnamas were addressed to Sikhs all over the country to join under Banda's banner and to obey his commands. After the death of Guru Gobind Singh, Banda Bahadur undertook the mantle of military leadership of the Sikhs with the view of establishing a Sikh state and to avenge the murder of Guru Gobind Singh and his sons. Under his leadership, Sirhind was sacked and Wazir Khan killed. The sovereignty of the Khalsa was established over Punjab and up to Lahore and the Jammu hills. Banda Bahadur's life is an important milestone in Sikh history, as it was under him that the first independent sovereign Sikh state was established with its own coins and seals. Although this was viable only for a short while, it was an important step towards later enabling the Sikhs to establish their own rule in many parts of Punjab.
When asked why he was waging a war against the Mughals, he said, "In every faith and in every land, whenever men have become corrupt, despotic and tyrannical, God sends a scourge like me to punish them and to teach a lesson." However, after fighting a courageous battle, in 1715, Banda and his men were cornered in a long, exhaustive siege, which ended in their defeat. He and his men were captured, and on the orders of the Mughal Emperor, Farrukh Siyar, they were brought to Delhi at a place in Mehroli, near the Qutub Minar. Banda was paraded through the streets around the tomb of Emperor Bahadur Shah. He was given only one option, to accept Islam or death. Neither Banda nor any of the Sikh followers accepted Islam, and all chose to die for their faith. Banda Bahadur's exemplary character and piety inspired his men. Not a single Sikh out of the thousands who were captured by the Mughal government renounced their faith. Every one of them held defiant against the Mughal power and chose death. Banda was ordered to kill his own 4-year-old son, Ajay Singh, but he refused. The child was butchered before his eyes. Banda was subjected to unspeakable and inhuman torture, and many Sikhs were beheaded and murdered every day. In 1719, just 3 years later, the Emperor Farrukh Siyar was deposed, imprisoned, blinded, and ultimately killed. Many feel that this was divine retribution for his inhumanity. Historian W.L.M. Gregor says, Banda Bahadur was a man of undaunted valor and bravery. According to Muhammad Latif, Banda Bahadur was a man who shook one of the most powerful empires in the world to its very foundations with such violence that it was never again able to re-establish its authority. According to writer Pyara Singh Datta, he was the first man who laid the foundation of political sovereignty of the Sikhs. He had brought about a revolution on the minds of the people. He was a great national hero and the first empire builder of the Sikhs. If you want to see more such videos, do subscribe to Delhipedia's YouTube channel. Did you know that the founder of the Sikh Empire was voted the greatest leader in the world history? Let me explain. He was called the Lion of Punjab for his bravery and is respected as one of the biggest heroes in the Indian history. He managed to rise from an unknown person to a founder of a large empire in the Punjab area, which is in current Pakistan and India. He fought next to his father at the age of 10 against the Afghans. His fame started to rise at the age of 17, and at the age of 22 he took Amritsar. Maharaja Ranjit Singh introduced reforms, modernization and investment into infrastructure and brought prosperity to Punjab, and he improved the Khalsa army. He created a period of Sikh cultural and artistic renaissance, and he has rebuilt the Harmandir Sahib or Golden Temple in Amritsar. Maharaja Ranjit Singh is remembered for uniting Sikhs, for founding the prosperous Sikh empire, and for his conquests. He amassed considerable wealth, including gaining the possession of Kohinoor diamond. Under his rule, the commander-in-chief of the Khalsa army was Hari Singh Nalwa. He participated in 20 major battles and helped to expand the Sikh empire. So हेलो सुन भाई, हमें खालिस्तान चाहिए और अस्सी खालिस्तान लेके रहेंगे। अच्छा जी, बड़े शेर हो सर। और भाई शेर भी हैं, दिलेर भी हैं। अच्छा फिर ये बताओ सर, पाकिस्तानी पंजाब भी लेर हो ना खालिस्तान में? मतलब लाहौर जो महाराजा रंजीत सिंह का पुराना कैपिटल है, वो खालिस्तान का नया कैपिटल तो होना चाहिए ना? नहीं यार, चाहिए तो, लेकिन क्या करें, अब्बा नहीं मानेंगे। क्या बोला तू? हेलो हेलो सर, आवाज कट रही है सर। हेलो, रख फोन, मैं रख फोन। हेलो, उल्टे सीधे सवाल पूछ देते हैं यार ये संगी लोग। पूरे विश्व में कोई ऐसा सिख नहीं है जो खालिस्तान नहीं चाहता। वही सिख खालिस्तान की मांग करता है जिसको भारत के टुकड़े टुकड़े करने में इंटरेस्ट है। वही सिख खालिस्तान की मांग करता है जिसको भारत देश से प्यार नहीं है। वही सिख खालिस्तान की डिमांड करता है जो पाकिस्तान के टुकड़ों पे पलता है। जो सिख सच्चा सिख है, गुरु गोविंद सिंह जी का सिख है, जिन्होंने इस भारतवर्ष के लिए अपना पूरा सर्वस्व बलिदान कर दिया,
उस भारतवर्ष के लिए, हिंदुओं की रक्षा के लिए जिस पंथ की स्थापना करी है, उस भारत के लिए जिसके लिए हमने इतनी कुर्बानियां दी हैं, उस भारत के लिए